Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 25th of June. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about India's total installed power capacity. Then we will be talking about Tripura, that is declared India's third fully literate state after Mizoram and Goa. Then we will be talking about TEG that has been recently done. We will be discussing it. Next thing we will be talking about, Adani has commissioned India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot plant in Gujarat. All these things and many more will be discussed in this video. So stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. So do watch these videos. They will be helping you in enhancing your knowledge. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. The first news that we are discussing is about our India. India's total installed power capacity has risen or rises to 476 gigawatt, right? This is nearly 50% of the from non-fossil sources that we are generating. Why this is important? Because we know that we want to become a carbon neutral country and we want to become a developed nation by 2047, and nowadays the developed nations are moving towards renewable sources of energy in order to conserve our environment, right? So this is a huge target for India that we have achieved recently, that we have achieved 476 gigawatt of installed capacity, right? That is 476 gigawatt. And another important thing, that first thing you need to remember is this, and second thing you need to remember here is that out of this 476, right, we are generating nearly 235 gigawatt from non-fossil fuels. Non-fossil fuels, what can they be? They can be your green hydrogen, solar energy, wind energy. Right now we are seeing that small atomic power plants are being also built, right? Take a note of this. Here you can see it is Government of India that has released the data on India's power generation capacity, and according to this, India's total installed power capacity has increased from 305 gigawatts in 2015-16 to 476 gigawatt as of June 2025, and nearly half of it, that is 235.7 gigawatt of India's total power generation capacity, comes from non-fossil sources, right? Then the thermal power alone accounts for 50.252%, that is 240 of the India's total installed power capacity, while coal alone contributes more than 91% of the thermal based energy that is being generated from thermal energy, right? Take a note of this. Then apart from this, the data also revealed that the electricity generation in India has increased from 1168 billion units in 2015 to 1824 billion units in 2024-25. Also, the installed renewable energy capacity has increased nearly 3 times, from 76.37 gigawatt to 226.79 gigawatt in June 2025, right? So what we are seeing, that from non-fossil based energy resources, or we can say the non-renewable sources of energy, we are shifting towards renewable sources of energy. And with this, if you remember, day before yesterday also we talked about that Hindustan Aeronautics Limited, right? They got a TOT, transfer of technology. What was this for? This was done by ISRO, correct? And what was the technology? Small satellite launch vehicle. One thing. Second thing, remember that day before yesterday only we discussed that NTPC, they have launched green hydrogen buses, green hydrogen powered buses. Where they were launched? They were launched in Leh, Ladakh, right? And these buses, they will be basically, earlier they were on the pilot basis, now they have been launched here in Leh Ladakh. So do remember these two things also, and this will be contributing to further towards the renewable sources of energy projects. Next you can see the solar power generation is at 110.9 gigawatt in 2025 and wind energy at 51.3 gigawatt.
Then if we talk about some of the schemes, one scheme was to promote the to provide the free electricity through solar rooftops panels, right? That is your photovoltaic panels. So for this, Prime Minister Surya Ghar Muft Bijli Yojana was launched, and it is the world's largest domestic rooftop scheme, launched in Feb 2025. The aim of which was to provide free electricity of 300 units per month to 1 crore households in India by March 2027 through the establishment of solar panels on their rooftop. Then next was Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Uttam Mahabhiyan, that is PM Kusum scheme, launched in March 2019, that is to enhance the farmers' income by providing energy and water security and de-dieselization of the farm sector. De-dieselization means that we should give away the diesels that were used for the generation and shift towards the renewable sources of energy. Next, moving on, next is Tripura. Tripura has been declared as the India's third fully literate state after Mizoram and Goa. Take a note of this, students, important, right? So they have achieved 95.6% correct literacy rate. And who is the Chief Minister of Tripura? Dr. Manik Shah. Dr. Manik Shah, right? And here remember, the government of India has set a target to achieve full literacy across India by 2030. And earlier it was Mizoram, then Goa, and now it is Tripura that has achieved 95.6% literacy rate, right? They have become the state that has achieved, they have become full literate, right? Then if we see here, the implementation of Ullas scheme, and all these are done under Ullas scheme, right? So what is Ullas? Understanding lifelong learning for all in society, right? This is a central sponsored scheme launched in 2022 by the Ministry of Education, and it aims to achieve universal adult literacy by India by 2027, and Government of India aims to set target to achieve full literacy in India, whole India, by 2030, right? Then in Ullas, foundational literacy and numeracy, that is FLN, basic education, vocational skills, right? They are focused upon. What is the capital of Tripura? It is Agartala. Next is Ministry of Statistics and Program Implementation has constituted TEG, right? That has been chaired by Surjit S. Bhalla. Surjit S. Bhalla, right? I repeat, Ministry of Statistics and Program Implementation constituted TEG, that has been chaired by Surjit S. Bhalla for India's first household income survey for 2026. Household income survey. Correct. For this, a TEG, that is your, what is TEG? TEG is your technical expert group. This will be a 8-member technical expert group that will oversee the India's full-scale household income survey that will be held in the month of Feb 2026. This survey is conducted by National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation. And who will be chairing this 8-member committee? Surjit S. Bhalla. Right, take a note of this. And the final report here, it will support the analysis from various regional income disparities, welfare targeting, and also the income equality. So all the data will be provided under this survey. Moving on, next is Adani commissions India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot project in Gujarat. And we just saw that recently. It is NTPC, what they launched. They launched India's first green hydrogen powered buses in Leh Ladakh, and now Adani has commissioned India's first off-grid 5 megawatt green hydrogen pilot plant. Where? In Gujarat, right? In Kutch, Gujarat specifically, right? This plant will support India's goal of becoming a global leader in the green hydrogen production, and also that aligns with Atmanirbhar Bharat. Also here you see this project is a significant milestone under National Green Hydrogen Mission. This was launched in 2023 with the support of $2.3 billion, right? And India want to become net zero carbon neutral, or we want to become carbon neutral by 2070. Next is ICMR, that is Indian Council of Medical Research, their arm NIH, that is National Institute of Immunohematology, right? They have launched India's first rare donor registry of India. This will aim to streamline the access of rare blood types for patients with conditions like thalassemia and sickle cell disease who require frequent and precise matched transfusions, right? Here this database, as it is a registry, so we can say it is a database, right? A proper data will be maintained of all the patients as well as the donors. This data will be focusing more on donors, and this will include 600 plus donors negative for
critical antigen combinations, right, so that they can contribute to the customer or to contribute to the patients whenever required. Correct. And this here registry or database, it will be registered with, or it will be linked with e Rakt Kosh. What is Rakt? Rakt is blood in Hindi, right? So e Rakt Kosh, right? This is India's digital blood bank, right? Take a note of this. Next is UPSC, that is Union Public Service Commission, has launched Pratibha Setu portal for near successful candidates. I repeat, UPSC under the direction of the Department of Personnel and Training, right? They have launched Pratibha Setu. This is a revamped version of the public disclosure scheme that was introduced in 2018, and this is designed to provide a career bridging platform for candidates who completed all the stage of various UPSC examinations but were not included in the final merit list, right? With this, so in simple terms, all the candidates who were in the final list, right, who gave the interview but did not qualify that, so those individuals, those candidates will now be provided with the job opportunities, which is a very good initiative, right, of the government, because there are multiple students who keep on preparing, but sometimes because of bad luck or some lack of preparation, right, though they are not able to crack the interview process, but that doesn't mean that they are not the eligible candidate, or they are not right, or they are not talented enough to go for any job, right? So government will be helping them to find the jobs, and even government will be providing them with various job opportunities here. Then next is international affairs students. Sustainable development report has been released, and it is Finland that has secured the first position, and India enters the top 100 for the first time. What does this mean? That India is somewhere doing good on sustainable development goals, right? So if we see the data, which is the on first position, it is Finland, then Sweden, Denmark, Germany, France, and India on the 99th position. Correct. Okay, for example, if I ask you, what is sustainable development goal 2? It is to make people free from obesity, right? Then if we talk about sustainable development goal 16, this is for press freedom, right? Remember this. Then coming back here, you can see a decade after the adoption of these sustainable development goals, progress is alarming behind the schedule. Fewer than 20% of the targets expected to be met by 2030, and only 17% of the targets are on the track to be achieved worldwide. So far, 190 of the 193 UN nation members have taken part in the voluntary national review process, that how are they performing in achieving these sustainable development goals, right? And remember one country, Barbados. Barbados is the country that stands out as a country with the that is most committed to the UN based multilateralism, right? Take a note of it. Then next, students, World Economic Forum 2025 Technology Pioneers cohort includes 10 startups from India. I repeat, this is World Economic Forum that is headquartered in Geneva, Switzerland. They have announced the 2025 cohort of its Technology Pioneers program that features 100 early age startup companies from 28 countries that are driving innovation across various industries. Out of these 100, a total of 10 Indian startups have been selected here for the 2025 cohort, right? What does this show? This is showing that India is now growing, and India is taking lead in various sectors, and we are equally contributing in the global growth. Correct? Take a note of this. Next, what are these startups can be here? Let me give you an example. For example, Agni Cosmos, Galaxy Space, E-Plane company, right? All they have been incubated under IIT Madras, and they were selected here. Next is banking and finance. Fin Ministry, RBI meet government officials on scaling up the unified lending interface. I repeat, recently it is my Ministry of Finance, right, and RBI, they held a high level meeting in New Delhi, right? This was on RBI's latest digital lending infrastructure unified lending interface, right? The meeting saw the participation from senior officials of the central and state governments, including RBI and RBI
hub. This ULI, this is basically an API, application programming interface, right? This is a platform that enables seamless and secure access to the authenticated borrowed data such as your Aadhaar card, land records, tax filings, KYCs by various banks and financial institutions. And this platform, it enables the banks, the NBFCs and the fintechs to disburse the loans faster and more efficiently to MSMEs, farmers and underserved borrowers, right? Take a note of this. So Fin Ministry met here on scaling up this ULI initiative. Moving on, next is L&T, that is Larsen and Toubro, list India's first ESG bonds worth 500 crore rupees on NSE. What is this ESG? Environment Social Governance bonds on the National Stock Exchange, and the company has raised 500 crore rupees through NCDs, that is non-convertible debentures, with a coupon rate of 6.35%. These NCDs, they will mature over a period of 3 years with annual interest payment, and this transaction was issued in partnership with HSBC that served as the sole leader arranger here. If we talk about L&T, where is the headquarter? Mumbai, Maharashtra. Moving on, next is economy and business students. S&P Global Ratings has raised India's GDP growth forecast for FY26 to 6.5%. That means they are projecting that India will be growing by 6.5% in FY26. Previously, they were projecting that India will be growing by 6.3%. Now they have raised their projection by 20 basis points. Next is science and technology students. Ministry of Defence has ordered 550 Nagastra 1R loitering munitions from SDAL for enhanced tactical operations. What is this SDAL? It is Solar Defence and Aerospace Limited. This is a subsidiary of Solar Industries India Limited. This contract is worth 158 crore rupees that will boost the Indian Army's precision strike capabilities, and these munitions, they are over 80% made in India, that will support Make in India initiative, right? As it means precision means GPS will be, they will be GPS enabled, right? And they will be able to track the location where they want to attack. Moving on, where is the headquarter of this SDAL? It is in Nagpur, Maharashtra. Then next is Dangeti Jahanvi selected as the astronaut candidate for Titan space mission. Right? Dangeti Jahanvi. Right? She is from Andhra Pradesh. Right? She has been selected as astronaut candidate for the space mission of the Florida, USA based Titan Space Industries, that is a private space agency engaged in space research. And she became the first Indian selected for this mission that is scheduled for the launch in 2029, and she has also become the first Indian to successfully complete USA based NASA's International Air Space Program. Correct? This mission, it will carry astronaut candidates on a 5-hour orbital journey, completing at least 2 full orbits around the Earth at an altitude of 300 kilometers. Next is sports. Arjuna awardee Lalit Upadhyay has announced retirement from international hockey. Take a note of it, right? He has played 183 matches. He scored 67 goals. He was honored with Arjuna Award in 2021. He is from Varanasi, Uttar Pradesh. Next, Obituary. FedEx founder Fred Smith, a pioneer of express delivery, died at the age of 80. Born in Mississippi, USA in 1944. Next, former Indian spinner Dilip Joshi has recently passed away, right, at the age of 77 in London, UK. He played 33 tests and took 114 wickets with 6 5-wicket hauls. Next is books and authors. Union Minister Rajnath Singh has released President's Speech Compilation Wings to Our Hope Volume 2. It is the curated collection of 51 speeches delivered by the President of India, Draupadi Murmu ma'am, during her second year in office at an event held at Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi. Next is Union Minister Jitendra Singh has unveiled Prem Prakash books, that is History That India Ignored. I repeat, Jitendra Singh, our Union Minister of Science and Technology, unveiled a book that is History That India Ignored, authored by New Delhi-based Asian News International chairman and veteran journalist Prem Prakash. The launch event was organized by Prabha Khaitan Foundation, and the book was published by Vitasta Publishing Private Limited.
Next is important day, students. International Day of Women in Diplomacy observed on 24th of June. It is to recognize and promote the participation of women in diplomatic roles, including peace building, negotiation, and multilateral diplomacy. Right? This marks the third edition of this day, and there is a theme here: eliminating structural barriers to women's leadership in diplomacy. Right? This was first observed in 2023. Next, here you can see the top countries here. First on first here it is Nicaragua, Finland, Iceland, Liechtenstein, and Estonia. Then students, these are your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning. ATEL Africa has partnered with Space Exploration Technologies Corporation, that is SpaceX, to deploy low Earth orbit satellites internet service across Africa. So it is to deploy Starlink low Earth orbit satellite internet service across Africa. And this Starlink is also owned by Elon Musk. In India also, it is Airtel and Jio, with which Starlink has partnered in order to provide internet services in India. Next, Paras Defence and Space Technologies Limited, they have signed a memorandum of understanding with which company to establish a joint venture for understanding, manufacturing and supplying hydrogen powered drones in India. So they have partnered with whom? They have partnered with Heaven Drones Limited. Correct? This MOU has been signed, or this joint venture has been signed with, or this MOU has been signed between Paras Defence and Space Technologies Limited and Heaven Drones, and they will be establishing a joint venture for the hydrogen powered drones. Right? They will be first of its kind in India. If we talk about hydrogen fuel only, hydrogen powered buses has also been recently launched. They were developed by NTPC and they have been launched in Leh, Ladakh. Next, which Indian Defence PSU delivered Arnala, INS Arnala, the first of 8 indigenously developed anti-submarine warfare shallow watercraft to the Indian Navy in Kattupalli, Tamil Nadu. So, which is that organization? It is GRSC that has developed this INSSV Arnala. Moving on, identify the name of the advanced AI-based text-to-speech model that supports 11 Indian languages and that is aimed to enhance the digital voice applications launched by Sarvam AI Private Limited in May 2025. It is, what is the name of that AI-based text-to-speech model? It is Bulbul V2 and it supports 11 Indian languages. Next, mention the satellite internet service provider that received the letter of intent from the Department of Technologies, making a key step towards their commercial operations in India. It is Starlink, students. We just discussed between, and Starlink will be partnering with Jio and Airtel in India for providing the satellite internet connection in India. Next, scientists from Chinese Academy of Science, Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asian cultivated dash by decoding the genomes of 144 wild and cultivated varieties across Asia. So, Chinese Academy of Science in Beijing, they have launched the first ever pangenome of Asia cultivated rice, right? And this was done by decoding of genome editing of 144 wild and cultivated varieties across Asia, right? A pangenome is a complete collection of a gene in rice that includes those all by shared varieties and those unique to the certain types, that helps the scientist in understanding better and improve the rice diversity. This will make it more resilient, better output will be there quantity wise also as well as quality wise also. Next, Taiwan conducted the first live fire test of which advanced artillery system supplied by USA at the Jupeng military base in Pingtung County in Taiwan. It is HIMARS or HIMARS, right? That is your high mobility artillery rocket system supplied by USA at the Jupeng military base in Taiwan. Next, in May, where did Indian Army successfully conduct a large-scale integrated field training exercise named Teesta Prahar, demonstrating operational preparedness and the seamless coordination between combat and support units of Indian Army in challenging the riverine terrain. It is West Bengal. Next, in May, India successfully conducted the trials of its indigenously developed low-cost counter-drone system by the name Bhargavastra.
at the Seaward firing range in Gopalpur, Odisha. Take a note of this. And this Bhargavastra, right? It has been developed by SDAL. What is SDAL? That is Solar Defense and Aerospace Limited. Next, identify the name of the GPS Global Positioning System like navigation system for the moon launched by Spanish technology company group Mecania del Vuelo, that is GMV, in May 2025, right? So a GPS on moon has been launched by GMV. Question asked is, what is the name of that GPS? It is Lupin. Lupin is the name for that system. Next, mention the name of India's fully indigenous automated air defense control and reporting system, which played a pivotal role in destroying Pakistan's aerial attacks by neutralizing and intercepting every inbound projectile during the 4-day military standoff between India and Pakistan in May 2025. Question asked is, name that India's automated air defense control and reporting system. It is Akshatir. Right, so all the drones, UAVs and missiles that were launched from Pakistan towards India, it were intercepted by Akshatir, and all these things were taking place during an operation by the name Operation Sindhu. Next, mention the satellite launched by ISRO aboard the PSLV C-61 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. It is the Earth Observation Satellite 09 and it was launched using PSLV Polar Satellite Launch Vehicle C-61. Next, mention the country that launched the first batch of AI-powered satellites using the Long March 2D carrier rocket to build the world's first supercomputer in orbit. It is China. Next, identify the Indian naval sailing vessel formerly inducted by Indian Navy at Karwar Naval Base, Karnataka. What is the name of that INSV? It is INSV Conindya. Next is, in May, Aerospace Industries Limited successfully tested the India's next generation drones under the Air Shield initiative. Right? Take a note of this. And what are these basically? It is your one is VTOL, vertical takeoff and landing, that is AER Recon Autonomous Reconsign Module 5, and Aircon ARM 10 has been launched here. Next is, identify the organization operating under the CSIR that successfully completed a series of pre-monsoon flight tests for its indigenous high-altitude platform prototype, making a significant advancement in India's capabilities in border surveillance and aerial monitoring. It is National Aerospace Laboratory. This is an arm of CSIR only. Next, the USA President Donald Trump unveiled a defense plan for $175 billion Golden Dome. This is a new missile defense system which will help USA in countering the foreign missile attacks that are fired towards the USA mainland. So Trump has appointed whom as the US Space Force as lead program manager. So he appointed General Michael Guetlin as the US Force as the lead program manager for this Golden Dome. This will be similar to that of Iron Dome of Israel, and it will be costing them more than $175 billion. Next, and USA will be having it by 2029. Next is, which battery technology was developed by researchers at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, using the Nesicon technology that can reach 80% charge in just 6 minutes and supports over 3000 charging cycles. So which is that battery technology? It is sodium ion battery technology. Next, space startup Agnikul Cosmos Private Limited, they successfully fired the India's first electric motor driven semi-cryogenic engine, which is set to power their upcoming Agniban launch vehicle. And this is the first time an engine of this kind has been developed and tested in India. Next is, mention the rare iron potassium sulfate mineral found by the Indian researchers in the arid Kutch region of Gujarat, confirming their potential as a natural geological clock for Mars exploration. So, mention the rare iron potassium sulfate minerals that were found. Which is it? It is jarosite. This is the mineral and found here in Kutch region of Gujarat,
and with this we can say that that particular area is a natural geological clock for Mars exploration, right? We can find the similarities between Kutch, Gujarat and the surface of Mars in certain places. Next, mention the name of the company that delivered the first of 6 indigenously developed Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force. So which is that company we are talking about? Name that company we are talking about. Alpha Design Technologies Private Limited. They have developed these Surya very high frequency radar systems to the Indian Air Force, and they were developed with a cost of 200 crore rupees. Now students, let's move to the homework section. First is who has been appointed as the Managing Director of Hitachi India. Second question, tell me who has been recently appointed as the new Chief Executive Officer of Finance Industry Development Council, FIDC. Third question, tell me who has been recently appointed, or recently tell me there was a first edition of Khelo India Beach Games. Tell me where were they held, location, and which state secured the top position in medal tally. Fourth question, who won gold in the women's 25-meter pistol event, right? Then fifth question, tell me recently when do we observe World Football Day? So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 25 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। देन त्रिपुरा को डिस्कस करेंगे, जो कि इंडिया की तीसरी फुली लिटरेट स्टेट बन गई है। देन हम बात करेंगे TEG कमेटी की, जो कि एक 8 मेंबर की कमेटी है, चेयर की जाएगी सुरजीत एस भल्ला जी के द्वारा, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे अडानी ग्रुप ने कमीशन किया है इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, कहां पर? गुजरात में। इन सभी चीज़ों को एंड मेनी मोर डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे ये वीडियो अपलोड करते हैं, तो इसको जरूर देखा करो। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 476 गीगावाट हो गई, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% जो कैपेसिटी है वो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ले रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ये दिखाता है कि हमारा जो टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, एंड 2047 तक हम काफ़ी ज़्यादा चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं। यहीं पे अगर हम डाटा देखें तो ये डाटा बताता है, जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 49% या 50%, 235.7 गीगावाट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, वो नॉन फॉसिल फोर्स सोर्सेज से आ रही है हमारी, राइट। अगर हम थर्मल पावर की बात करें तो 240 गीगावाट जनरेट करते हैं, हम अकाउंट्स फॉर 50.52% ऑफ द इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। मतलब इतनी तो हम थर्मल पावर जनरेशन से ले रहे हैं, और इसमें से भी 91% हम कोल से ले रहे हैं, मतलब कोल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है 1168 बिलियन यूनिट 2000 में 1168 बिलियन यूनिट से बढ़ के 2015-16 में बढ़कर अब 1824 बिलियन यूनिट हो गई 2024-25 में। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया में वो भी 3 टाइम्स हो गई, 76.37 गीगावाट से बढ़ के 226.79 गीगावाट, राइट। एंड यहीं पे अगर हम देखें सोलर पावर, ये भी बढ़कर 110.9 गीगावाट का हो गया 2025 में, इतनी सोलर एनर्जी जनरेट करी। विंड एनर्जी की बात करें तो 51.3 गीगावाट हमने जनरेट करी। फिर सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका एम क्या है कि सोलर रूफटॉप स्कीम लाएंगे हम, फरवरी 2024 में इसको लाया गया था। इसके अंडर 300 यूनिट पर मंथ दिए जाएंगे टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया बाय 2027। देन प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिससे फार्मर के इनकम को बढ़ाने की बात की गई कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें, सोलर एनर्जी के ऊपर बात करें। एंड जो डीजलाइजेशन है, डीजलाइजेशन मतलब डीजल हम यूज़ करते थे पहले जनरेटर में, तो उसको रोकने के लिए फार्म सेक्टर में हम उसकी जगह सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो सके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। त्रिपुरा डिक्लेयर की गई इंडिया की थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट। ये 95.6% लिटरेट हो गई है एंड जिससे हम कह सकते हैं ये फुल्ली लिटरेट स्टेट हो गई है, 100% लिटरेट हो गई है। एंड ये पहले मिजोरम थी, फिर गोवा बनी एंड अब ये त्रिपुरा तीसरी स्टेट बन गई है जो कि फुल्ली लिटरेट स्टेट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है, ये मार्क करके चलेंगे, पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है डॉक्टर मानिक शाह। ठीक है, एंड इंडिया का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2030 तक हम फुल्ली लिटरेट बन गए। एंड ये जो डिसीजंस लिए गए, ये लिटरेट स्टेट का फुल्ली लिटरेट बन गई, ये उल्लास के अंदर बनी। उल्लास इनिशिएटिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च्ड इन 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन लाइन विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया TEG में, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप में। ये 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, राइट, जो कि इंडिया के फुल स्केल हाउस होल्ड इनकम सर्वे को असेस करेगी, जो कि फरवरी 2026 में होगा। राइट, इस सर्वे को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। एंड जो ये 8 मेंबर की कमेटी है TEG, टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, राइट, इसको हेड कौन कर रहा है या फिर ये चेयर किसके द्वारा की जाएगी, तो डॉक्टर सुरजीत भल्ला के द्वारा, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला के द्वारा यहाँ पर इसको चेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अडानी ने कमीशन किया इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को, कहाँ पर, गुजरात में। टेक अ नोट ऑफ दिस। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, NTPC इन्होंने लेह लद्दाख में इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को लॉन्च किया। राइट, देखो ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है जिसके बर्निंग पे वाटर वेपर या फिर हम बोलें वेपर रेजिड्यू निकलता है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर वाटर रेजिड्यू निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। राइट, तो यहीं पे देखिए अडानी ग्रुप ने अब पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्टार्ट किया गुजरात में, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। राइट, जो कि हम देखेंगे आने वाले टाइम में फ्यूल की तरह यूज होता हुआ दिखेगा हमें बसेस में। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर इसको किया गया, जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ICMR का आर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री है। तो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि एक तरीके का डाटाबेस रहेगा जिससे हमारे जो डोनर्स हैं उनका पता रहेगा, क्योंकि जो रेयर ब्लड्स हो जाते हैं कई बार वो पेशेंट को ऑन द स्पॉट चाहिए होते हैं, वो मिल नहीं पाते। राइट, तो उसका पहले से अगर हमारे पास डाटाबेस होगा कि 100% डोनेट कर सकता है, ये डोनर है, तो उनसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है राइट टाइम पे। कंडीशंस जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, इनको फ्रीक्वेंट एंड प्रिसाइजली मैच ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड 600 से भी ज़्यादा डोनर्स का यहाँ पे डाटा मेंटेन किया जाएगा एंड इस डाटाबेस को इंटीग्रेट किया जाएगा ई रक्त कोष के साथ। ई रक्त कोष क्या है, ये बेसिकली इंडिया का ब्लड बैंक प्लेटफॉर्म है। मूविंग ऑन, UPSC ने लॉन्च किया प्रतिभा सेतु पोर्टल फॉर नियर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देखो जो UPSC कैंडिडेट्स जो कि फाइनल लिस्ट में आ गए लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए यहाँ पे सरकार ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लॉन्च करने का काम किया है। राइट, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि फाइनल लिस्ट में तो आ जाते हैं, इंटरव्यू तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू रह जाता है। राइट, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड काफ़ी बेनिफिट रहेगा इससे UPSC कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई एंड फिनलैंड ने टॉप किया यहाँ पर एंड इंडिया ने एंटर किया टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया की रैंक रहेगी यहाँ पे 99। मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम हो रहा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। राइट, नॉट एट दैट स्केल बट स्टिल अगर हमारी रैंक इंप्रूव हुई है तो ये एक बेटर न्यूज़ है। राइट, पहले हम 109 पोजीशन पे थे 2024 में, जो घटकर हम 99वें पोजीशन पर आ गए। करेक्ट, तो ये यूनाइटेड नेशन का UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN इनके द्वारा ये रिलीज़ किया गया 10वां एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की रैंक अंडर 100 आई, जो कि है 99। फिनलैंड ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी। राइट, सबसे ज़्यादा काम बेटर देखने को मिल रहा है। अब पहले डाटा देख लेते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस एंड अब इंडिया 99 पोजीशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ डिकेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस इज अलार्मिंगली बिहाइंड। मतलब हम जो हमारा शेड्यूल है उससे बहुत पीछे हैं एंड फ्यूअर देन 20% ऑफ द टारगेट्स को हम अचीव कर पाएंगे बाय 2030, जिसमें से भी 17% ऑफ द टारगेट्स ट्रैक पर हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की टेक्नोलॉजी पाइनियर्स कोहॉर्ट रिलीज की गई, ये जहां पर 10 इंडियन स्टार्टअप्स को इसमें चूज किया गया। देखो सबसे पहले ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा टेक्नोलॉजी पाइनियर्स कोहॉर्ट कराया जाता है, राइट। इसमें वर्ल्ड के 100 टॉप स्टार्टअप्स को यहाँ पे चूज किया जाता है, अर्ली स्टेज कंपनीज को चूज किया जाता है फ्रॉम 28 कंट्रीज, राइट, जो कि इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं इन वेरियस सेक्टर्स, इन वेरियस इंडस्ट्रीज। एंड सन 2000 से हम ये देख रहे हैं ये इवेंट होता हुआ आ रहा है, करेक्ट। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये हुआ था एंड यहाँ पर 10 इंडियन स्टार्टअप्स को चूज किया गया फॉर 2025 के कोहॉर्ट, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, रोबोटिक्स, इनमें जैसे फॉर एग्जांपल गैलेक्साई टेक उसको चूज किया गया है, अग्निकुल कॉस्मोस को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एंड दोनों आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई के एक ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिले एंड उन्हें यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के ऊपर काम करने की बात की गई कि हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये है क्या है, ये एक यूपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो एनेबल करता है आपकी सीमलेस, सिक्योर एंड ऑथेंटिकेटेड बोरर डाटा को, मतलब डाटा जैसे सच एज आधार कार्ड, लैंड रिकॉर्ड्स, टैक्स फाइलिंग्स, राइट, एंड केवाईसी, इसका डाटा बोरो करने के लिए अलाउ करता है कि दूसरी कंपनीज इसको बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स, एनबीएफसीज, राइट, ये आपकी फिनटेक कंपनीज, ये आपका डाटा यहाँ से फ्रीक्वेंटली कैच करती हैं ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी को मैच कर सकें। एंड इससे होगा क्या, जब ये एनबीएफसीज, आपके बैंक्स, राइट, एंड फिनटेक कंपनीज इस डाटा को लेगी तो इससे जो एमएसएमईज हैं, राइट, उनको लोन डिस्पर्स करने में काफ़ी ज़्यादा ईज होता हुआ दिखेगा, राइट, फॉर एमएसएमईज, फार्मर्स एंड अंडरसर्व्ड बोरोवर्स को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर हमें इससे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर इसको स्केल करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर एल&टी, इन्होंने लिस्ट किया इंडिया के पहले ईएसजी बॉन्ड्स को वर्थ 500 करोड़ रुपीस एनएसई पे। ईएसजी क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस बॉन्ड्स, ये एनएसई पे लिस्ट किए गए एंड 500 करोड़ रेज करने की बात की गई थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, मतलब रेज किए गए। 6.35% का कूपन रेट रखा गया एंड 3 साल का यहाँ पे मैच्योरिटी रहेगा, हर साल यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 19 जून 2028 को ये मैच्योर होंगे, राइट। एंड एचएसबीसी, राइट, इनकी पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर ये सोल लेजर अरेंजर था यहाँ पर, करेक्ट। एल&टी का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। एस&पी ग्लोबल रेटिंग, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट करी फॉर FY26। कितनी प्रोजेक्ट करी, 6.5%। पहले इन्होंने प्रोजेक्ट की थी 6.3%, राइट, लेकिन फिर अब इन्होंने अपनी प्रोजेक्शन को 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है एंड ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.5%। अगर हम बात करें FY27 की तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.7% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक पर आते हैं स्टूडेंट्स। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 450 नगस्त्रा 1 आवर लॉइटरिंग म्यूनिशन का ऑर्डर दिया है। किसको दिया है, SDEL को दिया है, राइट, मतलब फॉर एनहेंस टेक्टिकल ऑपरेशन। देखो सबसे पहले ये नगास्त्रा 450 नगास्त्रा 1 आवर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम कह सकते हैं सुसाइड ड्रोन्स, जाएंगे जो टारगेट है उस पर जाके ब्लास्ट हो जाएंगे, करेक्ट। तो इनका अभी ऑर्डर दिया है 450 इन ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, करेक्ट। किसको दिया है, SDAL को, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ये नागपुर बेस्ड कंपनी है, नागपुर महाराष्ट्र, इनको ये ऑर्डर मिला है। 158 करोड़ रुपीस का ऑर्डर रहेगा जिससे इंडियन आर्मी की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज काफ़ी बढ़ती हुई दिखेगी एंड ये ड्रोन्स आपके सुसाइड ड्रोन्स आपके 80% मेड इन इंडिया है। GPS एनेबल्ड है, मतलब ये टारगेट को देखेंगे एंड टारगेट पे जाके ब्लास्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दनगेती जहानवी, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो पहली एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट बनी फॉर टाइटन स्पेस मिशन। ये टाइटन स्पेस मिशन 2029 में लॉन्च किया जाएगा एंड ये पहली इंडियन बनी है जो कि एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट की गई है टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के प्राइवेट स्पेस एजेंसी मिशन के लिए, जो कि स्पेस रिसर्च में फोकस रखते हैं, राइट। ये मिशन इनका ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर होगा जो कि 2029 में लॉन्च किया जाएगा एंड ये वो पहली इंडियन भी बनी जानवी जो कि USA के नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को इन्होंने क्लियर करा, राइट। एंड ये जो मिशन है ये बेसिकली एक 5 आवर की जर्नी होगी जिसमें अर्थ के 2 फुल ऑर्बिट्स कवर किए जाएंगे 300 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पे स्टूडेंट्स। अर्जुन अवॉर्डी ललित उपाध्याय, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल हॉकी से। ये 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं एंड 67 गोल्स किए इन्होंने इंडिया के लिए, 183 मैच खेले हैं एंड इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है। 2021 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
देन आ जाते हैं ऑब्यूटरी पे। फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 इन टेनेसी यूएसए। 1944 में मिसिसिपी यूएसए में इनका जन्म हुआ था। फिर आ जाते हैं फॉर्मर इंडियन स्पिनर दिलीप जोशी, इनका भी निधन हो गया 77 की एज में लंदन यूके में। एंड इन्होंने 33 टेस्ट प्ले किए एंड 144 विकेट्स ली एंड 65 विकेट हॉल्स लिए। फिर आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने रिलीज की प्रेसिडेंट स्पीच कंपाइलेशन विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 को। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम की जो स्पीचेस हैं राइट इन सेकेंड ईयर इन ऑफिस राइट 2000 अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक, उन स्पीचेस को यहाँ पे दर्शाया गया है इस वॉल्यूम 2 में। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने प्रेम प्रकाश की बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इस बुक को अभी रिसेंटली अनवेल किया है राइट। जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश की ये बुक रहेगी, इनके द्वारा ऑथर की गई है राइट। ये एएनआई के चेयरमैन है, एशियन इंटरनेशनल के, एंड वेटरन जर्नलिस्ट हैं। एंड इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई ये जो बेसिकली जो बुक है ये कब लॉन्च की गई, ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि था प्रभा खेतन फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था एंड वितस्ता पब्लिशिंग के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा इन न्यू दिल्ली। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि जो वीमेन का रोल है डिप्लोमेटिक रोल इंक्लूडिंग पीस बिल्डिंग नेगोशिएशन उसको प्रमोट करने के लिए तीसरा एडिशन इस डे का ऑब्जर्व किया गया। एंड यहाँ पे थीम याद रखेंगे एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू वीमेन्स लीडरशिप इन डिप्लोमेसी, एंड 2023 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज में कितनी मिनिस्टर वीमेन है, जैसे निकारागुआ, फिनलैंड, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, एस्टोनिया एंड सो ऑन। कितनी परसेंट यहाँ पे वीमेन आप देख सकते हैं इनके कैबिनेट में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। फिर हम चलेंगे अपने होमवर्क सेक्शन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं पायरस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन्होंने एक एमओयू साइन किया हेवन ड्रोन्स लिमिटेड के साथ, एंड ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हाइड्रोजन पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर काम किया जा सके इन इंडिया राइट। इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन पावर्ड बसेस की, ये भी अभी इंडिया में लॉन्च की गई हैं। कहाँ पे लॉन्च की गई? लेह लद्दाख में लॉन्च की गई। एनटीपीसी के द्वारा इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन डिफेंस पीएसयू ने डिलीवर किया अरनाला को, जो कि फर्स्ट ऑफ द 8 इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, टू द इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया इन कटुपली तमिलनाडु। तो कौन सा है वो है जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एडवांस्ड एआई बेस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल जो सपोर्ट करता है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को, दैट आर एम्ड एट एनहांसिंग द डिजिटल वॉइस एप्लीकेशंस लॉन्च्ड बाय सर्वम एआई प्राइवेट लिमिटेड इन मई 2025। तो उसका नाम है बुलबुल V2। ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ये एआई मॉडल। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि एक की स्टेप है टुवर्ड्स कमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया। हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ये है स्टारलिंक। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस बीजिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर पेंजियम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस को राइट, जो कि डिकोड किया गया है बाय द जीनोम्स ऑफ 144 वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज अक्रॉस एशिया। ये बेटर होगा आपका, इससे हीट रेजिस्ट टेम्परेचर रेजिस्टेंट होगा, बेटर आउटपुट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। नेक्स्ट, ताइवान ने कंडक्ट करा फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट ऑफ विच एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम, जो कि सप्लाई किया गया बाय यूएसए एट द ज्विपिंग मिलिट्री बेस इन पेंगटोंग काउंटी ऑफ चाइना। तो ताइवान ने कंडक्ट किया फर्स्ट लाइव फायर टेस्ट किस चीज़ का? ये था आपका हिमर्स का करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये है हिमर्स से आपका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, एंड ताइवान को डिलीवर किया गया बाय यूएसए राइट, बिकॉज ऑफ द राइजिंग टेंशन जो पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्ट अ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, तीस्ता प्रहार जो हमें देखने को मिली। तो ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में हुई थी, इंडियन आर्मी के द्वारा ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा ट्रायल्स ऑफ देयर इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है भगवस्त्रा राइट, एट द सीवर्ड फायरिंग रेंज इन गोपालपुर ओडिशा। SDAL के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द GPS लाइक नेविगेशन सिस्टम जो कि मून के लिए डेवलप किया जा रहा है,
स्पेनिश कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, जीएमवी कंपनी का नाम रहेगा। इसका नाम क्या है जो मून पे जीपीएस लॉन्च किया जाएगा, तो वो है ल्यूपिन। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज फुल्ली इंडिजिनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट प्लेड अ पाइवटल रोल इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान का एरियल अटैक्स। यहाँ पे 7 जगह पे इंडिया के द्वारा अटैक किए गए थे। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेंशन द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनियसली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने वापस इंडिया पे यूएवीज, ड्रोन्स, मिसाइल से जब अटैक किया तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंडिया का सिस्टम था उसका क्या नाम है, वो है अक्षतीर। ये पूछा गया और उस ऑपरेशन का जो इंडिया ने लॉन्च किया था वो है ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मेंशन द सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो यूजिंग PSLV C61 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये वो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिसने लॉन्च किया फर्स्ट बैच ऑफ AI पावर्ड सैटेलाइट्स यूजिंग लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट, राइट, टू बिल्ड द वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर ऑर्बिट में ही, राइट, सुपर कंप्यूटर बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे कौन कर रहा है, ये चाइना के द्वारा करा जा रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल फॉर्मली इंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एट करवार नेवल बेस, कर्नाटका। तो क्या नाम है उस INSV का, वो है INSV कौनिंद्या। नेक्स्ट, एयरस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स को अंडर द एयरशील्ड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर CSIR जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया सीरीज ऑफ प्री मॉनसून फ्लाइट टेस्ट फॉर देयर इंडिजीनियस हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप, जो कि एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इंडिया की कैपेबिलिटीज़ में इन बॉर्डर सर्वेलेंस एंड एरियल मॉनिटरिंग। तो वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये CSIR का ही नाम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। इनके द्वारा ये टेस्ट कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक डिफेंस प्लान अनवेल किया। $175 बिलियन का ये प्लान रहेगा फॉर गोल्डन डोम। गोल्डन डोम क्या है, ये सिमिलर है आपका आयरन डोम जैसा, जो कि इसराइल का है, जो कि इनकमिंग थ्रेट्स को, मिसाइल्स को, UAVs को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो सिमिलरली USA की मेन लैंड की तरफ जब कोई मिसाइल या ड्रोन आएगा तो उनको न्यूट्रलाइज करने का ये गोल्डन डोम काम करेगा। 2029 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। $175 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, राइट, इन्होंने अपॉइंट किया किनको ऑफ US स्पेस फोर्स एज द लीड प्रोग्राम मैनेजर। तो माइकल ग्वेटलिन यहाँ के लीड प्रोग्राम मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दिस गोल्डन डॉम। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा एट जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च, जो कि बेंगलोर में है, यूजिंग नेसिकॉन टेक्नोलॉजी, जो कि 80% चार्ज कर सकती है बैटरी खुद को 6 मिनट के अंदर एंड 3000 चार्जिंग साइकिल्स तक ये ऑपरेट कर सकती है। तो ये है सोडियम आयन बैटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सक्सेसफुली फायर किया इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक इंजन को टू पावर द अपकमिंग अग्निबाण लॉन्च वीक। इसके बाद आ जाते हैं, उस मेंशन करो उस रेयर आयरन पोटेशियम सल्फेट मिनरल का जो कि इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा कच्छ रीजन में फाइंड किया गया ऑफ गुजरात, जो कि नेचुरल जियोलॉजिकल क्लॉक है फॉर मार्स एक्सप्लोरेशन। मतलब जैसा यहाँ पे वो इन्वायरमेंट हमें जो मटेरियल मिनरल्स देखने को मिले, सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल मिनरल्स हमें मार्स की सरफेस पे देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट बनाता है कच्छ गुजरात को, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी हमें मार्स पर देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर हमें कच्छ में, ये है जेरोसाइट, राइट, जो कि आयरन पोटैश सल्फेट मिनरल है। Now students, let's move to the homework section. First is, who has been appointed as the managing director of Hitachi India? Second question, tell me who has been recently appointed as the new chief executive officer of Finance Industry Development Council, FIDC. Third question, tell me who has been recently appointed, or recently tell me there was a first edition of Khelo India Beach Games. Tell me where were they held, location, and which state secured the top position in medal tally. Fourth question, who won gold in the women's 25-meter pistol?
event, right? Then fifth question, tell me recently when do we observe World Football Day? So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.